Okay, guys. So as I told you, in the last class we have discussed some good questions based on LCM and HCF, right? And मैंने आप लोगों को बताया था. I told you that in today's session we are going to discuss something, very interesting. Okay. I'll just give you a hint about that. Okay, what actually we are going to discuss. So let's say if I'll ask you that how many factors are there for 10, you'll tell me the answer very easily. You'll say, sir, it's one. If you count one as well, yeah, you can count one. Okay, 1, 2, 5, and 10 itself. There are four factors for 10. Very good, absolutely correct. Fine. Can you tell me the factors of 10,000? Number of factors of 10,000? Gonna be a difficult question because one is there. Okay, let's think about it. Okay, 1, 2, 4, 5, 8, 10. After that, 20, 25, 16, definitely 8. I already told you it, right? 34, 32, yeah, 32. And like that. There's going to be more, right? And 50 would be there, 100 would be there, 200 would be there, 500 would be there, right? 250 would be there, and a lot of factors are going to be there, right? So isn't that seems a bit difficult to find out the number of factors if I give a big number? Okay. On the other hand, if I'll ask you that what is the sum of all the factors of 10,000? Is that seems very difficult now? Because it was difficult to even get the number of factors. Now you are asking me to find the sum of the factors. Really difficult. If I know all the factors, if somehow I will list them down, all of them, I can then find the sum, but it's difficult to list them down. Okay, maybe for 10,000 some of the people might get it, but what if a number is other than that or a more bigger number, like let's say if number is 2 power 8, 3 power 9, 5 power 7, 7 power 8, that's the number, that's the biggest number, like not biggest, I mean, like it's a very big number, right? Now if I'll ask you for this big number to find the sum of the factors, okay, just to find the number of factors seems difficult, right? Okay, this is something that we are going to tackle today. One more thing that we are going to tackle today is, let's say if I'll ask you that, okay guys, I'm telling you one thing, 2014 power 2019, 2014 power 2019, solve it and tell me the unit digit of the number. Seems difficult. Yeah, it is actually. So today we are going to discuss both the things. We will be discussing how to find the unit digit of these big numbers, and at the same time we are going to discuss that how to tackle the problems in which the number of factors or the factor they are asking us, right? Okay, let me share my screen and let's start. Give me a second. Okay guys, so I hope my screen is visible to everyone. Quite clear? Yeah. Just a second. Okay, so as I told you, today's part is factors, counting factor, digit-related problems, and factorization is something we know. So that's simple, right? Apart from the first three topics are actually good to understand. Yeah. So now look, let's come to the point. First of all, what is the meaning of factors? Okay, guys, factor is something that divides a given number, completely divides a given number. Okay, that's called a factor. It's called a divisor as well, right? Okay, so basically, for an example, for 12, look at the example. For 12, the divisors are 1, 2, 3, 4, 4, and 6, and 12. 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Divide 12 by 1, divide by 2, 3, 4, 6, or 12. The remainder is always going to be 0. And also, when I'm talking about the factors now, they have to be like the I would say natural numbers, right? Or whole numbers. I mean, like 1 is also there, so you should say whole numbers, right? They should be whole numbers. इफ नॉट कि कोई फैक्टर है, कोई मतलब सॉरी कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं ले सकते, फ्रैक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट थिंग। अब बताता हूँ कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बस ध्यान लगाना अपना पूरा यहाँ पे, यू विल गेट इट वेरी इजीली। ओके, देखो, सो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे सीधा, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फॉर्मूला राइट नाउ, लेट्स थिंक समथिंग एल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, पहले कुछ सोचते हैं। थिंक अबाउट इट गाइस, लेट्स से यू हैव 3 bananas. There are 3 bananas and all the bananas are identical, exactly same, like you cannot differentiate them, they are that much same, right? Okay, now if I'll ask you that, guys, how many ways in how many ways you can pick one banana out of the 3 bananas when all of them are identical?
you will have just one way to pick the banana. Why? Because all of them are same. Either you pick the first one, or you pick the second one, or you pick the third one. The case will be the same, right? So out of 3 bananas, if I'll ask you how many ways are there to pick one banana, that is only one way. Okay. Now if I'll ask you guys, okay, out of 3 bananas, you have to pick 2 bananas this time. Bananas are again identical. How many ways you have now? Again, you have only one way. Why? Because all the bananas are same. Either you pick the first two, or second, third, or first, third. Doesn't matter, because all of them are same. Samjho, try to understand the point. There are two glasses to you, right? You can see both of them are different. This is smaller one, this is bigger one, right? Okay. If I'll ask you that out of 2 glasses, pick one glass, how many ways you have? So you will say you have 2 ways. If you pick this one, and if you pick this one, both of them are because different. So out of these 2 glasses, if I'll ask you to pick any one glass, how many ways you have? You have 2 ways, because if you pick this glass, the number of ways is one way you are getting from this. And if you pick this one, you have one more way, because both of them are not identical. They are different objects. Now, on the other hand, if I'll say that, let's say they are not same, but let's say they are the same pens, exactly same pens, exactly same. I'm saying, I'm giving you this, that are exactly same, right? Out of these, if I'll ask you that, okay, you have to pick any one, how many ways you have? You will say, okay, I'll pick this one, or I will pick this one. But if I look at both of them are same, that means the number of ways are same. That means we are getting only one way. So when the things are identical, when the things are exactly same, so out of n things, if you pick any number of things, you will get only one way, right? So to pick one banana, we have one way. To pick 2 banana, we have again one way. And even to pick 3 bananas, we have only one way, right? Okay. So if I'll say that out of 3 bananas, if you can pick any number of bananas, how many way you have? So I am asking you that, okay, you have 3 bananas, out of which you can pick any number of bananas. You will say, sir, I can pick one banana, one way for that. I can pick 2 bananas, one way for that again. And I can pick 3 banana, one way for that again. But what if I will pick 0 bananas? One way for that as well. So I'll add one as well. Okay. So I'll get 4 ways. Now try to understand. If there are 3 bananas identical, then any number of bananas can be picked up in 4 ways. In 4 ways. Getting my point? That is working over here. And I am saying you an important point, that all the bananas are identical. All the bananas are identical. Okay. When all the bananas are identical, out of 3 bananas, you can pick any number of bananas in 4 ways, right? Now, guys, just understand this in another way. Let's say if you n things. If you have n identical things, okay, and out of n identical things, if I'll ask you to pick any number of things, okay, the number of ways of picking up any number of things is what? N plus 1. There were 3 bananas. We got the answer as 3 plus 1. Sorry. Right? So when you have, n things, the number of ways would be n plus 1. Is this part clear to everyone? First of all, tell me about that. If this is clear, then we can definitely move forward. First of all, this has to be clear in that case. Clear, Happy Babat? Sure? Tell me. Okay, I think it's clear. I'll still tell you again, guys. Basically, if you have n number of identical things, out of which you have to pick any number of things, that means first of all, you can pick 0 things. To picking 0 things, you have one way. Picking up 1 thing, you have again one way. Picking 2 things, you have again one way. Picking 3 things, you have again one way. Okay. So picking n things, you have again one way. So number of ways are how many? Number of ways are how many? N plus 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. How many times? N plus 1 times. Okay. Got it? Got it now? Sure. Okay. Now look, this is something we are going to use in our question. Just think about it now. Look how I'm going to use it. Okay. Look at this. So now the question is that you have a number n. Okay. Look at this. I'll ask you in that way. You have a number n. P, Q, R are prime factors of n, and A, B, C are the power. Okay. Let's say you have a number n, and it is written as P power A, Q power B, and C R power C. So you are doing the prime factorization of the number, and after doing the prime factorization of the number, okay, what you are getting is basically you are getting n equals to P power A, Q power B, and to R power C. You are doing the prime factorization. Okay. Now I'm asking you to find the number of factors.
Think about it. If you are doing the prime factorization of a number, I'll I'll give an example of also. Let's say for 12 we'll take, okay? So 2 2s are 4 into 3, right? Okay. So after doing the prime factorization, you have 2 into 2 into 3. That's the prime factorization of 12. Okay. Now, if I ask you to find the factors, what you will do? For 2 powers, you have 2. 2 power, you have 2. 3 power, you have 1. Okay. Now, to get the number of, I would say, the factors, right? Or how can you get the factor? First of all, understand that. Please start to understand that. Okay. You have 2 power 2 and you have 3 power 1. First of all, I am picking 2 power as 0 and 3 power as 0. Then I'll pick 2 power as 1 and 3 power as 0. Then I'll pick 2 power as 2 and then 3 power as 0. Then I'll pick 2 power as 0 and 3 power as 1. Then I can pick 2 power 0 and 3 power 2. Okay. Then I can pick 2 power, okay, which is remaining now? Okay, 2 power 2 and 3 power 1. Okay, yeah, this is, if you solve it, what it will become? It will become 1, it is 2, it is 4, it is 3. Oh wait, 3 power 2 तो possible ही नहीं है ना? How I wrote that down? Okay, this is not possible. Sorry guys. 3 power is only 1 na? I cannot pick 2. 2 power 2, they got 12, right? And one more is remaining, that is 2 power 1, 3 power 1, and that is 6, right? Or is there any other way to pick up? Now we have picked up all the ways, right? Now think about it. 2 power, either I can pick 0 or I can pick 1 or I can pick 2. 3 power, I can pick either 0 or 1. In all the ways, what I will be getting ultimately is a factor, right? Right? Now, 2 power, as I said, 2 power, you can pick either 0 or 1 or 2. So the picking up the power of 2, how many ways you have? You have 3 ways. Why? As I told you, if there are n identical things, out of which if you can pick, you want to pick any number of things, you have n plus 1 ways, right? Here also you have 2 identical 2s, na? 2s are identical. So to pick any number of 2s out of 2 identical 2s, how many ways you have? You have 2 plus 1, 3 ways. Second way, you have, look at this. What I said 2 plus 1, 3 ways, right? And then to pick the power of 3. 3 power is what? 3 power is 1. So to pick up any number of 3 from 3 power 1, how many ways you have? You have n plus 1 ways. N is 1. Power is 1, right? You have only 1 3. The answer is what? It's 3 into 2, and that's 6. And that will be give me the number of factors of 12. Right? In the same way, if a number whose prime factorization, if you are doing, and its prime factorization is giving you p power a, q power b, r power, so you can understand it like that, that you have p is, let's say, banana. So you have a bananas, you have b mangoes. Let's say a p is banana. Let's say, okay, p is banana, q is, this is mango, and r is, let's say, apple. So you have a number of apples, a number of bananas, b numbers of mangoes, and c numbers of apple. If I'll ask you to pick any number of fruits, in how many ways you can pick, you will say, sir, bananas I can pick in a plus 1 ways. You said that to pick n identical things, we have n plus 1 ways, right? Here you have a banana, so you have a plus 1 ways for bananas. For mango, you have b plus 1 ways, and for apples, you have c plus 1 ways. And this will give me what? This will give me the number of divisors or number of factors of n. Okay, so to get the number of factors of n, what you will do, you will say that I can write a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. First step would be to doing the prime factorization of the given number. Okay, the first thing would be to do the prime factorization. Whatever number is given to me, I will do the prime factorization of that number. After doing the prime factorization of that number, let's say if the prime factorization is p power a and q power b and r power c, the number of factors would be a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. Tell me, are you getting it? Tell me. What out बताओ. If there is any doubt, please tell me, guys. I would be more than happy to tell you, definitely. Got it, right? Everyone in the class is quite clear about that. Okay, now look at this, please. So ये तो हो गया हमारा first, that we have derived, in fact. Now, as I told you, we can understand two things today. We can understand about a sum of factors as well, right? अब sum of factors के अंदर actually क्या है ना, right now I am just giving you a formula, okay, to remember it. But later on, definitely, when I'll teach you something about GP, okay, I'll definitely let you know how to solve it, right? देखो, ये formula also is not a good formula. I'll give you a direct formula. इससे भी अच्छा formula ये होगा. You just use this formula. Look at this. You will use p power a plus 1 minus 1 over p minus 1. P is the
a factor and a is its power, right? Then q power b plus 1 minus 1 over q minus 1. They are in the multiplication point. And then if there is other one also, then you will write r power c plus 1 minus 1 upon r minus 1. Okay, you'll use this formula directly. Don't use this one. I mean, definitely, I wanted to tell you the derivation of this formula, but right now, you don't know about AP, GP, sequences, all of these things. So don't worry, but I will tell you. When I'll teach you AP, GP or these things, I'll definitely tell you the proof of the formula, okay? But right now, you can remember it. Fine? Okay? Now look at this. I'll explain to you by a question. Let's say you have a question. Let's say the number n is given by 2 power 3, 3 power 5, and 5 power 8. Okay? And let's say 7 power 2. If someone asks you to find the number of factors, what you will do, look at this. As I told you, add 1 in the power, right? So 3 plus 1 into 5 plus 1. And first of all, check it's a prime factorization. Prime factorization, 2, 3, 5, 7, all of them are prime numbers, right? 5 power is 8, so 8 plus 1. 7 power is 2, so 2 plus 1. That's it. Can you believe that? That's your answer, guys. That's your answer. Solve it and you get the answer. There's a number of factors. And what is the sum of the factors? Sum of the factors, again, you have to use the formula. And the formula is also very simple again. 2 power 3 plus 1, that's 4. 3 plus 1 किया मैंने वहाँ पे? Over 2 minus 1, right? And then 3 power 5 plus 1, 6, 3 minus 1. Then 5 power 8 plus 1, 9. And then 5 minus 1. And then 7 power 2 plus 1, and then 7 minus 1, right? If you solve it, whatever you'll get is the sum of the factors. Simple, eh? Is there any doubt about it? Formula, for this formula, I told you derivation as well. For this one, I'll tell you derivation later on. Don't worry, but I will tell you. Okay? Yeah. Try this question, guys, everyone. You need to find the sum of the factors and the number of factors as well. Give it a try. Should I? Okay. Look, first of all, first step is doing the prime factorization of 120. 120 is 4 into 30, so it would be 2 power 3, guys. Okay, 8. 8 into 15, so 3 power 1 and 5 power 1, right? Okay, first thing I asked you is sum of the factors. You will write 3 plus 1. Sorry, sum of the factor first of all I'll ask. तो formula क्या होगा? 2 power 3 plus 1 minus 1 upon 2 minus 1. ये मैंने पहले भी use किया था. I'm using the same thing again. 3 power 1 plus 1 minus 1 over 3 minus 1. And then 5 power 1 plus 1 minus 1 upon 5 minus 1, right? You solve it, you'll get a sum of factors. Simple. Second is number of factors. Now to get the number of factors, what you have to do actually is that you have to simply add it, right? So 3 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1, right? So 3 plus 1 is 4. 4 into 2, right? And that would be 16. Got it? Some simple number of factors we got, and some of the factors also we got, right? Is there any doubt about it? Tell me. If there's any doubt, just let me know. No doubt, right? Quick. Perfect. Fine, let's move. हाँ ये देखो यहाँ देखो है 16 और सॉल्व करेंगे 45 आ जाएगा इसको कर लेना सॉल्व यार नॉट अ प्रॉब्लम राइट ओके नाउ इफ ये क्यों आ गया यहाँ पे okay I think the question is that there's a number 54321 54321 a yeah guys the question is that there's a number 54321 a if the number is divisible by 9 find the value of a. So now we are solving the digit related problem where you have to find the digits or something, right? So देखो इसके लिए ना you just need to remember the rule of divisibility of 9. Okay, so what is the rule of divisibility of 9? Rule of divisibility of 9 is that the sum of the digits should be divisible by 9. Sum of digits should be
divisible by 9. What is the sum of digits over here? 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus a. And that would be 15, right? 15 plus a. Now 15 plus a is divisible by 9 when a can, देखो 9 का डिविजिबल क्या होता है? 9 1 are 9, 9 2 are 18. So a can be 3. अब अगला होता है 9 3 are 27. Right? To get 27, a has to be 12. But a is a single digit whole number. That means a cannot be equals to 12. So only value possible for a is what? 3. Simple सा बहुत ज़्यादा. Clear है? Okay. The answer is 3. कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट. अब आएगा वो कॉन्सेप्ट जिसका हमें वेट था. जैसे मैंने आपको बोला था ना कि 2014 पावर 2015 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ. ठीक है, तो एक्चुअली अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं. देखो होता क्या है, सॉरी गाइस, होता क्या है बेसिकली यूनिट डिजिट के लिए ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट. व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट यूनिट डिजिट एक्चुअली होता है एक साइकिल के अंदर होता है, एक रिपीटेशन के अंदर होता है. इट विल ऑलवेज रिपीट. लेट मी एक्सप्लेन यू. लुक एट दिस, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 2 होता है. 2 पावर 2 का कितना होता है? 4. 2 पावर 3 का कितना होता है? Try to understand. 8. I am just talking about the unit digit right now, okay? 2 power 4 is 16. Unit digit is what? 6. What is 2 power 5? 32. What is the unit digit? 2. What is 2 power 6? 64. What is the unit digit? Tell me. 2 power 7. 128 ना? 8. 2 power 8 कितना होता है? 256. 6. Okay, 2 power 9 कितना होता है? 512. 2. 2 power 10? 1024. 4. 2 power 11? 2048. 8. 2 power 12? 4096. 6. What is happening? There is a cyclicity. There is a cyclicity of unit digit, right? 2 power 1, 5, 9, 13. 13 के बाद 4 और ऐड कर रहा हूँ, 4 ऐड कर रहा हूँ. देखो 2 power 1, 5, 9, उसके बाद 9 के बाद 4 ऐड करोगे 13, 13 के बाद 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 17, 21, 25, and then 29, and then 33. For all of them the unit digit is what? 2. Okay, फिर 2 power 2 मैं 4 ऐड किया, 6, 6, 4, 10, 10, 4, 14, 14, 4, 18, 18, 4, 22, 22, 4, 26, 26, 4, 30. इन सबके अंदर यूनिट डिजिट क्या है? 4 है. ऐसे ही फिर 2 पावर 3 का भी और 2 पावर 4 का भी. गेटिंग माय पॉइंट. अब इससे हमने क्या सीखा, समझना बात का अच्छे से. लेट्स से कोई मुझसे पूछता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 2 1 2 power 56 for an example. Okay, so I just need to find the unit digit, right? What I need to find? I need to find the unit digit. अब someone might ask me, sir, what about this a 10th digit or 1000th digit? देखो इस method से we cannot find that thing. There is a method for that as well. Binomial theorem we will learn later on. But right now, to get the unit digit, we can use this concept, right? Okay. So now to get the unit digit, what we can say कि ये last में इसके 2 आ रहे हैं. मतलब we have to check the cyclicity of 2. लेकिन इसकी पावर कितनी है? 56 इसकी पावर है. अब 2 की पावर अगर 1 होती है तो ये आता है, 2 होता है तो ये होता है, 3 होता है तो ये, 4 होता है तो ये. सॉरी. देन वी नो अबाउट 5 6 7 8. देन वी नो अबाउट 9 10 11 12. तो एक तो ये कि आप ऐसे काउंट कर लो कि 4 यहाँ पे, 8 देखो 4 के मल्टीपल यहाँ पे आ रहे हैं, 4 8 12. 56 ऑल्सो है मल्टीपल ऑफ 4, राइट? तो दिमाग लगा लो या फिर आप समझ रहे हो. आप एक तो आप एक काउंट करो कि 2 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ऐसे काउंटिंग कर लो कि जो 1 का आएगा वही 5 का आएगा, वही 9 का आएगा, वही 13 का आएगा, वही 17 का आएगा, ऐसे करते जाओ. तो नो दैट्स नॉट अ गुड मैथड. दैट्स अ वेरी बिग मैथड. रादर देन व्हाट यू विल डू, 56 है, ठीक है, 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से हैं? 4 8 12 सब मल्टीपल ऑफ 4 है. सब में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. इसमें भी कितना आएगा? 6 आएगा. तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया. बात खत्म. 6 आ गया आपका आंसर. समझ रहे हो बात को? बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. अब देखो इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं, इसको थोड़ा सा ना जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. वी विल ट्राई टू जनरलाइज इट ताकि हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़े. समझना बात को. देखो यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए पावर्स 159, व्हेन यू डिवाइड 1 और 5 और 9 बाय 4 यू विल गेट द रिमाइंडर एज 1. नेक्स्ट में लिखा हुआ है पावर 2 6 10. व्हेन यू डिवाइड दीस पावर्स बाय 4 यू गेट द रिमाइंडर एज व्हाट? 2. ठीक है. एंड 3 7 11 लिखा हुआ है बाद में. इफ यू डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर वुड बी 3. एंड लास्ट में लिखा हुआ है 4 8 12. डिवाइड बाय 4 करोगे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, राइट? सर 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 5 से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 4 के बाद वो चेंज हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो
यहाँ पे अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ ऊपर, 4 के मल्टीपल पे ऊपर जा रहा हूँ, दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइड बाय 4, राइट। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, एक बड़ा नंबर है, उसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, और उसकी कोई पावर का आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट you have given a number whose unit digit is 2, and there is some power of the number is given to you, and you have to find the unit digit after solving the complete thing. Okay, so what you will do in that case, you will divide the, I'm writing the concept guys, divide exponent by 4, sorry, हाँ, yeah, by 4 if the remainder is 1, रिमाइंडर कैन बी इधर 1, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 0 आएगा। अगर 1 आया रिमाइंडर, तो हमने पढ़ा ना अभी 2 पावर 159 सब में क्या होता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। अगर लेट से रिमाइंडर आता है आपके पास में 2, तो क्या होगा फिर आपका आंसर, फिर यूनिट डिजिट क्या होगा, देन इन दैट केस यूनिट डिजिट वुड बी 4। ओके, 3 आया तो क्या होगा 8, और 0 आया तो क्या होगा 6 होगा, दैट्स इट। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मान लो हमारे पास नंबर है 1 2 3 2 पावर 67, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज द साइक्लिसिटी ऑफ 2। सर साइक्लिसिटी ऑफ 3 4 5 भी होती है, सबकी होती है, सबकी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल के 2 की बता रहा हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। पावर क्या है 67, डिवाइड बाय सॉरी 67 को डिवाइड बाय 4 किया, क्या रिमाइंडर आएगा बताओ, 3 आएगा, राइट। 3 आएगा तो क्या होता है यूनिट डिजिट, 8 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 8, बस इतना सिंपल, समझ रहे हो। 1 2 3 2 पावर 67, कम कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, मना कर दिया कैलकुलेटर। इफ यू राइट 1 2 3 2 पावर 67 द कैलकुलेटर ना, यू विल नॉट गेट द आंसर, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट गेट इट, राइट। तो इसलिए कैलकुलेटर से भी अच्छा है हमारे पास अपना दिमाग, उससे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल आएगा और एकदम ठीक आएगा, राइट। अब ये तो हो गया आपका साइक्लिसिटी ऑफ 2, मैंने आपको समझाया अभी कि हाउ द 2 वर्क्स, दिस इज अ कॉन्सेप्ट फॉर 2। So if the power, sorry, the number's last digit is 2, then what you will do is that you will divide the exponent by 4 if the remainder is 1, the unit digit is 2, if the remainder is 2, then 4, 3 है तो 8 है, और 0 है तो 6 है, राइट। और ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रटा या कुछ ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपके सामने सॉल्व किया, तो अभी देखो, पहले बात तो सर डिवाइड बाय 4 क्यों किया, क्योंकि 4 के बाद वो रिपीट हुआ, 2 की पावर 1 2 3 4 तक चेंज हुआ था, 5 में फिर से सेम हो गया, फिर 6 7 8 फिर 9 फिर से सेम हो गया, तो 4 के बाद रिपीट कर रहे हैं, दैट्स वाई, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सर हाउ डू यू नो दैट इफ द रिमाइंडर इज 1 दैट इट्स 2, देखो 2 पावर वहां पे 1 थी, 2 पावर 1 थी, 1 है, 2 पावर फिर 5 है और 9 है, all of the powers either 1 or 5 or 9, if you divide them by 4 the remainder is 1, if the remainder is 1 unit digit is 2, then the next powers is 2 6 and 10, if you divide 2 6 10 by 4 the remainder is 2, in that case the unit digit is 4, the next powers are 3 7 11, if you divide 3 or 7 or 11 by 4 the remainder is 3, and if the remainder is 3 the unit digit is 8, okay. And the last one 4 8 12, if you divide the numbers by 4 you get the remainder as 0, and in that case the unit digit would be 6। ये हो गया आपका 2 के बारे में, राइट। अब ये रूल फॉलो होता है सबका, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी, सबका होता है, बताता हूँ फटाफट से। समझ गया, मैं सबका देखो मैं ड्राइव नहीं कराऊंगा, सबका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रूल ऑफ 3 क्या होता है, देखो 3 पावर 1 3 पावर 2 होता है 9, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81, एंड देन 3 पावर 5 अगेन 240, वापस 3 में 4 का चलता है, ठीक है। सो 3 में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड द एक्सपोनेंट, डिवाइड द एक्सपोनेंट बाय 4, ठीक है। अगर रिमाइंडर आता है हमारे पास 1 1 2 3 और 0, इस पॉसिबिलिटी रिमाइंडर की ये पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर लिखता हूँ आपके यूनिट डिजिट, राइट। तो इन दैट केस इमीडिएट 3 पावर 3 3 9 3 3 27 एंड 3 4 81, राइट। सो ये हो गया आपका आंसर, ये रूल ऑफ 3। अब बात करते हैं रूल ऑफ 4 के बारे में। और रूल ऑफ 4 क्या बोलता है, 4 1 4 4 4 पावर 2 16, 4 पावर 3 64, अगेन इस बात देखो 2 पर रिपीट हो रही है, समझो बात को। 4 पावर 1 4 4 पावर 2 16, 4 पावर 3 कितना 64 होता है, वापस 4 आ गया ना, 2 पे रिपीट कर रहा है इस बार सिर्फ, राइट। तो 2 4 में क्या करते हैं हम लोग, अगर जो है इफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो इफ एक्सपोनेंट को डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय 2 करो, सॉरी इस बार 2 से है इसलिए डिवाइड बाय 2 करो, और अगर रिमाइंडर आता है आपके पास 1, राइट, तो क्या होगा डिजिट 4 होगा, ओके। एंड इफ द रिमाइंडर इज व्हाट 0, तब क्या होगा 6 होगा। 5 का ऑलवेज 5 होता है, 5 का कितना भी कर लो 5 का हमेशा 5 होता है, 6 का भी हमेशा 6 ही होता है, ठीक है। बाकी नंबर्स का आप अपने आप से खुद सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आके, ठीक है। 5 का मैंने आपको बता दिया, 6 का मैंने आपको बता दिया, बचा क्या 7 8 और 9 बचा। 9 का बता देता हूं मैं, 9 का भी सिर्फ 2 ही होते हैं, क्योंकि
9 के वजह 2 होते इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट वाला आप लोग भी ट्राई करो ना यार। तो इफ एक्सपोनेंट को डिवाइड करेंगे, इस पे लिख रहा हूँ मैं बार बार, एक्सपोनेंट को डिवाइड करोगे, एक्सपोनेंट को डिवाइड बाय, जैसे वहां पे लास्ट वाले में क्या 2 से डिवाइड, यहाँ भी क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे एक्सपोनेंट को। अगर रिमाइंडर आता है आपका, देखो 9 वन जा 9, 9 पावर 1 क्या होता है, 9 होता है, और 9 पावर 2 क्या होता है, 81। तो 9 आएगा या फिर 1 आएगा, रिमाइंडर अगर 1 आता है और 0 आता है तो ठीक है। क्या बचा बताओ, 5 का ऑलवेज 5, 6 का ऑलवेज 6, बचा कितना, 7 8 बचा है ना अभी सिर्फ। खुद से ट्राई करोगे कुछ तो, 7 8 खुद से ट्राई करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन करें कुछ यहाँ पे फैक्टराइजेशन, एक सेकंड रुको, एक इसके अंदर एक स्लाइड ऐड करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। So guys, you have to find the unit digit for all of them. 123 power 26 first, then 125, 1251 power 18, 1251, okay. And then the next one would be, let's say 1294 power 49. These three you have to solve, guys. Give it a try. Give it a try quickly. Give it a try and I'll be just back in a minute, okay? Just a minute. हाँ जी, तो हो गया आप लोगों ने सॉल्व, ये बता रहा हूँ देखो मैं आप लोगों को। 3 का था ना, 3 के लिए आई टोल्ड यू डिवाइड बाय 4 करो, 26 को डिवाइड बाय 4 करोगे, क्या रिमाइंडर आएगा बताओ, सॉरी 2 आएगा रिमाइंडर, राइट। 2 पे कितना होता था 3 का, 3 का होता था 2 पे 9, देखो ना अभी बताया तो आपको। 3 में एक्सपेंड को डिवाइड बाय 4 करो, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो कितना आएगा डिजिट, 9 आएगा, सिंपल। 1 में हमेशा 1 ही होता है यार, आप लोगों ने एक क्यों नहीं सोचा, लास्ट में 1 है, 1 इंटू 1 इज ऑलवेज 1, सो 1 अगर लास्ट में तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 4 पे देखो आप लोग, 4 में मैंने आप लोगों को क्या बताया, 4 1 जा 4, 4 पावर 2 16 और 4 पावर 64, ठीक है। तो अगर डिवाइड बाय 2 करोगे आप लोग इसके अंदर, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो 4 होगा, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 4 आएगा आंसर, ठीक है। देखो मैंने बताया भी आप लोगों को, 4 में अगर एक्सपोनेंट को डिवाइड बाय, इफ नहीं लिखना था मैंने बोला था पहले भी, एक्सपोनेंट को डिवाइड बाय 2 करो, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, सिंपल, गॉट इट, ओके। तो गाइज अब जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोगों को आते हैं ऑलरेडी करना। तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है, तो मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बताओ, 2 इंटू 3। 15 का क्या होता है बताओ, 3 इंटू 5, राइट। और 21 का क्या होता है बताओ, 3 इंटू 7। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन विच उसमें क्या करोगे, जो भी कॉमन दिख रहा है ना, जो तीनों में हो कॉमन, वो ले लो आप, दैट इज 3। सो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, बस दैट्स इट। एलसीएम के लिए आप लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखना इसका, एलसीएम का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग यू हैव टू टेक, नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर, ठीक है। अब देखो किसी भी नंबर के अंदर पहले बात करते हैं 2 की पावर का, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 ले लो आप, सब में से जितना भी है, 2 पावर हाईएस्ट इज 2, दैट इज इन 12। देन व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन, लाइक फर्स्ट नंबर के अंदर 3 पावर 1 है, सेकंड में भी 3 पावर 1 है, थर्ड में भी 3 पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 3 पावर 1 ओनली। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, फर्स्ट नंबर में 5 पावर 0 है, सेकंड में 5 पावर 1 है, थर्ड में 5 पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितना हुआ, इट्स 1 ना,
ओके, देन व्हाट वाज 7? 7 पावर इन द फर्स्ट नंबर इज 0, सेकंड नंबर के अंदर भी 0 है, थर्ड नंबर के अंदर 7 है. ओके, यू सॉल्व इट, you'll get the LCM, right? Okay, so it would be 420 if you solve it. Fine. Now for 17, 23 and 29 you can find the LCM and SCF yourself, right? Okay, not a difficult question, you'll be able to solve it very easily. ठीक है, चल, तो ये हो गया हमारा 420 और वाला, और ये आप लोग खुद कर ही लोगे एज आई टोल्ड यू. तो बस फिर गाइज ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है. और इफ यू फील एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, डेफिनेटली आई एम अवेलेबल ऑलवेज फॉर यू गाइज. ओके, लेट्स पुट द क्वेश्चन ऑन द PDF एंड आई विल आंसर यू देयर, राइट? ओके, ठीक है, फिर चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज. तब तक के लिए रिवाइज करना, इस कॉन्सेप्ट को जो आज पढ़ा है उसको अच्छे से देखना, और क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना, मजा आएगा. ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में. बाय, सी यू.